Now we are going to do illustration 12. It's extremely important for you to practice such illustrations again and again, and questions, similar questions in the exercise and in the extra material. Okay. Now let's start with the question. From the following transaction, write journal in the books of Sri Rajveer. So write the heading. Now it's 2014 August. 2014 August 1. First transaction. A business is commenced with introduction of cash of 50,000, receivable of 25,000, liability of 10,000. Now owner यहाँ पे receivable तो ला रहा है, but liability भी लेके आ रहा है, and stock of goods 15,000. So यहाँ पे थोड़ा tricky है. So ध्यान दो, यहाँ पे ओनर कैश तो लेके आया, रिसीवेबल लेके आया. उसका मतलब क्या है कि उसको कुछ लोगों से पैसा लेना था, तो उसने वैसा कहा कि ये पैसा डायरेक्टली अब बिजनेस को दे देना. तो मेरा जो रिसीवेबल था पर्सनल, वो अब रिसीवेबल हो गया ऑफ माय बिजनेस. तो कैश आया असेट, रिसीवेबल आया असेट, बट लायबिलिटी भी आया. यानी मुझे किसी को अगर 10,000 रुपीज देना था, तो अब मैंने उसको कहा कि ये पैसा मेरे पास मांगने मत आना, ये पैसा मैं बिजनेस के अकाउंट से तुम्हें दूंगा, या ये पैसा मेरा बिजनेस तुम्हें चुकाएगा. तो असेट तो ओनर लेके आया, लेकिन लायबिलिटी भी लेके आया. सो लेट्स गो वन बाय वन. असेट से चालू करते. कैश अकाउंट डेबिट. Cash comes in 50,000. Then first let's write all the asset. Receivables, account debit 25,000. Then stock of goods. स्टूडेंट्स मिस्टेक करे इसके लिए, रिसीवेबल के बाद तुम देख सकते हो लायबिलिटी दिया है, पर तुम्हें लायबिलिटी नहीं, पहले सारे असेट साथ में लिखने हैं. स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट is 15,000. Two. Now liability account, credit liability, so it's credit always. कितना liability लाया वो? 10,000 का. And two, capital account. कितना कैपिटल आया? 50 plus 25 plus 15, 90 minus 10 is 80,000. यानी नेट ओनर कितना पैसा लेके आया? 80,000 वो लेके आया. सर पहला कैपिटल लखी सकता है? हाँ लखा है, लखा है. कोई જ प्रॉब्लम નથી. You can do like that also. पहला कैपिटल रखो અને પછી લાયબિલિટી લખો. એના કરતા મને લાયબિલિટી ટુ રાઇટ લાયબિલિટી first is more preferable for me. You can do as you are comfortable, okay? Because I always wanted to go with this logic that cash, receivable, stock, then liability. So what all is the difference is my capital, okay? So this is preferable, but then your choice. But don't make mistake in examples. किसी को कोई doubt? Should we proceed now? Okay. Now
और 10% लोन ऑफ 30,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती। तो श्रीमती से लोन भी ले लिया, तो बढ़िया हो गया। तो लिख लेते हैं 30,000 कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%, सो टू 10% श्रीमतीज लोन अकाउंट। ये श्रीमती किसकी श्रीमती है? ये राजवीर की। ओके, ऐसा एजम्पशन है, एंड आई थिंक राइट एजम्पशन है। थर्ड, लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश 20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंस 5,000। नाउ पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लैपटॉप कितने में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अवर लैपटॉप? 20,000. Wrong answer. 20,500. 20,500. Is the cost of my laptop. अगर मैं 500 नहीं एक्स्ट्रा दूंगा तो हो सकता है मैं ये लैपटॉप यूज नहीं कर पाऊँ। ऐसा जनरली होता है कि लोग कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, उसको इंस्टॉल करवाते हैं, फिर यूज करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई खर्चा है, वी डोंट नो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट हमने लिए हैं। तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। सो लैपटॉप का कॉस्ट इज 20,500। डू वी नीड टू रिकॉर्ड नेम ऑफ जयवीर? No. नो। सो No, sir. कैश गोज आउट, कितना कैश गोज आउट? Yes. 20,500. 20,500. So laptop is 20,500 to cash account. 20,500. Next, opened bank account with Dena Bank by depositing 15,000। देखो उसका नाम ही है देना। ओके, मांगी रहा है पैसा, तो हमने देना बैंक को पैसा दे के अकाउंट खुला दिया। जबरा नाम है देना बैंक। ओके, अलग अलग इसको प्रोनाउंस करके इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, देना, पैसा देना, अकाउंट खुलाना। ओके, सो देना बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट। फोर्थ, amount is 15,000 to cash account 15,000। नरेशंस अभी हम नहीं लिख रहे, बट यू हैव टू राइट नरेशंस। ओके, डोंट फॉरगेट इन एग्जाम। नेक्स्ट, goods of 30,000 purchased from Royal Stores on credit at 10% trade discount. Royal Stores paid freight rupees 200 and wages rupees 1,000 on our behalf। यानी मेरे बदले वेजेस और रेलवे फ्रेट रॉयल ट्रेडर्स पे कर रहा है, पर वो खर्चा किसका है, हमारा है या रॉयल ट्रेडर्स का है? हमारा। हमारा है। ओके, सो नाउ यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट, फिफ्थ वन, amount is 30,000 discount। 27,000. फिर रेलवे फ्रेट भी हमारा खर्चा है,
So railway freight account debit कितना आया? रेलवे फ्रेट इज 200. सर बोलो. ये मेरी बुक में 6th डेट का है, 5th अलग है सर। नहीं, गुड्स ऑफ 30,000 परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स, दैट इज 5th. अपने 50 कर रहे हैं ना. दिस इज माय न्यू बुक. मैं सर अलग है। हाँ, तो तुम्हें ये बुक फॉलो करना है. तुम्हारा लेटेस्ट बुक है. ओके सर। ये तुम्हारा लेटेस्ट बुक है या पुराना बुक है? चेक करो प्लीज. हेलो हेलो. निष्ठा, ते पूछी तू? यस सर। તારી નવી બુક છે કે જૂની બુક છે બેટા? ओके हाँ, सर पुरानी होगी, पता नहीं। नहीं पता चलेगा ना. देखो, जीएसटी का चैप्टर दिया है तो नया है. जीएसटी का चैप्टर नहीं दिया है तो पुराना है. ये चैप्टर का नंबर 3 है या नंबर 4 है? एक मिनट। पेज नंबर क्या है? 82 है तुम्हारा पेज नंबर. 76। 96. 76। हाँ, तो ये तुम्हारा पुराना बुक है बेटा. ओके सर। नया ले लेना. उसमें जीएसटी और जर्नल एंट्रीज में भी काफी ट्रांजैक्शंस है. ओके, जीएसटी रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करना है. ओके Okay. So railway freight account debit 200, and then we have wages account debit 1,000. Now ये तीनों हमें किसको पे करना है? ये तीनों हमें पे करना है रॉयल स्टोर्स को. रॉयल स्टोर्स अकाउंट. So 28,200. Any doubt in this? Should I proceed? Okay, now sixth one is important. Sixth one is important. Goods purchased from royal traders, out of which goods of 15,000 sold to Bhagwati traders at 10% trade discount after adding 20% profit on it. Paid railway freight 1,000 and wages 500 on their behalf. उनके बदले हमने खर्चा किया तो वो हमारा खर्चा है नहीं. वो पैसा हम उनसे रिकवर कर लेंगे. तो फर्स्ट लेट्स डू द वर्किंग फॉर दिस. वर्किंग करते हैं हम इसके लिए. सर इसमें वर्किंग नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. नहीं, क्योंकि फिर वो तुम्हें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा बेटा. तुमने ही मुझे डाउट पूछा था ना कि 540 और 500 कहां से आया. हाँ तो ये वर्किंग करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके ओके. गुड्स कॉस्टिंग. गुड्स का कॉस्ट है 15,000. उसमें 20% प्रॉफिट. So 3,000 comes to 18,000. अब ये हमारा आएगा ये आएगा हमारा सेल्स प्राइस. अब माइनस करना पड़ेगा इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट 1800.
अब हमारे पास रह गया 16,200, तो ये आ गया हमारा ए नेट सेल्स. सो एंट्री वी विल पास विद दिस 16,200. बाकी सब वर्किंग है, इंपॉर्टेंट है बट वर्किंग करना. ओके, सो 15,000 का गुड्स जो खरीदा था हमने, वी सोल्ड फॉर 16,200. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ तो अब ये हमने बेचा, वी सोल्ड दिस टू भगवती. So Bhagwati say we have to collect now 16,200 for goods sold, plus we have to collect railway freight 1,000 and wages 500. So we have to collect 1,500 more. So 16,200 plus Bhagwati, sorry, भगवती ट्रेडर्स, ट्रेडर्स या सिर्फ भगवती है? भगवती है. ओके, भगवती अकाउंट डेबिट. नाउ भगवती से हमें कितना पैसा लेना है? 16,200 फॉर गुड्स सोल्ड प्लस 1,000 for railway freight plus 500 for wages. So bracket में लिख दो 17,700. सर ये रेलवे फ्लाइट और वेजेस अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये ऑन बिहाफ हमने पे किया, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है. पर सर गुड्स रिलेटेड अकाउंट है तो इसमें हाँ हाँ, गुड्स रिलेटेड है, पर क्या मैं ये खुद पे कर रहा हूँ? नहीं. हाँ, मैं नहीं पे कर रहा हूँ. मैं यानी ये मेरा खर्चा नहीं है, पे भले मैं कर रहा हूँ बट मेरा खर्चा नहीं है, तो वैसे भी वो मेरा खर्चा है नहीं, तो यहाँ पे आएगा नहीं. पर मान लो ऐसा दिया होता कि वी हैव पेड, ऐसा नहीं लिखा होता ऑन बिहाफ, तो हमें इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता. गॉट इट? तो सर इस टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो जो टोटल रहेगा वही डायरेक्ट लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना है ना हमें नोट? तो काशी, यस सर. भाई जो આવી રીતે તું અકાઉન્ટ્સમાં ગોખમ પટ્ટી ના કરીશ. ઓકે, કે સર ऐसा करना है वैसा ही करना है. नो, ट्रांजैक्शन पढ़ के देखना है क्या हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. और ऐसा ही कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन है पर ऑन बिहाफ वर्ड यूज नहीं किया है, तो फिर हम भगवती को 16,200 से ही डेबिट करेंगे और सेल्स को 16,200 से ही क्रेडिट करेंगे और वेजेस और रेलवे फ्रेट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे. वेजेस अकाउंट डेबिट, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट. तो એવી રીતે તું એ ગોખીશ નહીં બેટા, પ્લીઝ. ઓકે સર. તું ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચ, સમજ. અહીંયા આપણે ગુડ્સ વેચ્યા છે ભગવતીને અને એના બદલે આપણે આ પે કરીએ છીએ, એટલે એના બદલે અગર તારા બદલે હું કઈ ખર્ચો કરીશ તો હું તારી આગળથી આ રિકવર કરીશ કે નહીં? કરશો. We are going to recover from Bhagwati. Understood this? ઓકે સર. Okay. So મતલબ એવા ટાઈપનું અગર ઇફ આપણે કોઈની પાસેથી જ્યારે કઈ રિકવર કરવાનું હોય તો એને અલગ અલગ રીતે નોટ નહીં કરવાનું ને? नहीं, केम के तो પછી આપણે એના નામ આગળ લખવું પડે ને. અગર માની લે કે આપણે કોઈના બદલે ખર્ચો કર્યો છે તો આપણે એનું નામ આગળ એનો ખર્ચો પણ ઉમેરશું ને, કે ભાઈ સામાન વેચ્યો એના 100-200 લઈશ, 1,000 રૂપિયા એના બદલે મેં ભાડું ચૂકવ્યું, એના બદલે મેં મજૂરી ચૂકવી, તો હું એના નામ સામે કેટલું અમાઉન્ટ લખીશ ભગવતીના નામ સામે? હા, એટલે એવું જ કે એ ટોટલ કરીને લખવાનું જે આપણે એના બિહાફમાં કર્યું છે. હા હા. ઓકે. એ પરચેસ કે સેલમાં નહીં લખવાનું, જેની આગળથી લેવાનો છે એમાં હા એડ. હા ઓકે હા. ઓકે. સો 2 now sales account 16,200 and 2 cash account
1,700. Sir, 1,500. Oh, sorry, 1,500. I'm sorry, 1,500. Understood this? All of you? See, it's an illustration, but it's a tricky sum. That's why I'm doing it in my session. Because I have observed that whenever I give illustration for homework, सब अपने आप भगवान भरोसे नहीं आया तो देख लिया, लिख लिया. That is why I'm doing. It's really important you understand all these concepts. Okay, I think up to 6th किया है, बाकी हम कल करेंगे. So illustration number 12. We did till transaction number 6. Now let's go to transaction number 7. Goods of 50,000 purchased from Kruti at 10% trade discount, 10% cash discount, half amount paid by check. So again, half amount trade discount, cash discount. So we will be doing the working. So let's go to the 7th one. $50,000. So goods purchased minus 10% trade discount, 5,000. $45,000. This is A, net purchases. So net purchases we will pass the entry for purchase. Now B, half amount paid or settled. So half of 45,000, 22,500. Now जब हम ये 22,000 पे करने के लिए चेक लेके जाएंगे, so we will say कि 10% डिस्काउंट दे दो मुझे, because that was the terms of purchase. So 10% cash discount 2250. So what we are left with is, or what our check amount will be, 20,250. So this is check given by us or check issue. Now C, amount payable to Kruti. Now 45,000 का गुड्स खरीदा, 22,500 सेटल कर दिया, तो कितना पे करना पड़ेगा? A माइनस B. A माइनस B क्या है? 45,000 minus 22,500. So 22,500. Now purchases always debit, amount settled dash, check given. So बैंक में से पैसा जा रहा है, credit, discount भी credit, and payable to Kruti is the giver, credit the giver. So we will make the entry directly from our working. So purchase account debit, $45,000 to Kruti account,
22,500 to bank account because check is given 20,250 and to discount account 2250. Underline narrations will write later on. Should I proceed now? No, sir. Okay. I'll wait. Okay, now next one. Eighth one. Mark it important. Eighth, please mark it important. Eighth is very important. Now, sold goods to Bhagwati. Goods sold to Bhagwati, returned back goods of 540, which we returned back to Royal Stores. Now, please dhyan do, this is a very important transaction. Please mark it important. Now, once again, I am reading goods sold to Bhagwati, returned back goods of rupees 540. So out of goods what we sold to Bhagwati, Bhagwati returned back goods of 540 which we returned back to Royal Stores. Now let's understand this concept, how this works. Now, Royal Stores से we purchased and ये जो goods थे we sold to Bhagwati. We sold to Bhagwati. Now what is happening? Out of the goods, यानी ये जो goods हमने भगवती को दिए, ओके, अब ये यहाँ आ गए. इसमें से भगवती is returning some goods to us. So ये हो गया हमारे लिए sales return. तो ये goods हमने जिससे खरीदे थे, हम वो goods रॉयल स्टोर्स को वापस कर देंगे. तो ये हो गया हमारे लिए परचेज रिटर्न. ये पता चला सबको? ये पता चला सबको? स्टोर से और हमने बेचा भगवती को. अब भगवती हमें कुछ वापस करेगा तो वही हम उठा के रॉयल स्टोर को वापस कर देंगे. यू अग्री? बट यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट है, रॉयल स्टोर से जो हमने खरीदा उसके बाद जो हमने भगवती को बेचा उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया. यू अग्री विथ मी? 15,000 का गुड्स था वो हमने 16,200 में बेचा. I'll show you the transaction. Now let's take an example. Okay, just example है कि मान लो हमने 10,000 का गुड्स खरीदा from रॉयल स्टोर्स. रॉयल से 10,000 का गुड्स खरीदा और यही गुड्स हमने भगवती को बेचा for 12,000. अब तुम मुझे बताओ कि मान लो भगवती ने इसमें से हाफ गुड्स हमें वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न कितने अमाउंट का होगा? 6,000. तो अब परचेज रिटर्न जो हम करेंगे, जो रॉयल से खरीदा था, यही गुड्स हम रॉयल को वापस चिपका देंगे कि ले भाई डिफेक्टिव है, नहीं चला. तो रॉयल हमें कितने रुपए इसका देगा? 5,000. 5,000. 5,000. All of you understood this? So the point over here is sales return will be at sales price and purchase return will be at purchase price. You agree with me? Yes. अगर तुमने भगवती को 12,000 में बेचा और भगवती ने पूरा सामान तुम्हें वापस कर दिया तो तुम्हें तो भगवती को 12,000 वापस करना पड़ेगा.
तो अब यही गुड्स तुम जब रॉयल को वापस करोगे तो वो क्या तुम्हें 12,000 देगा या 10,000 देगा? 10,000. 10,000. 10,000. So you understood this concept? तो कंसेप्ट क्या याद रखना है? सेल्स रिटर्न एट सेल्स प्राइस एंड परचेज रिटर्न एट परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस. अंडरस्टूड दिस? ऐसा हो तो लिख लो, लिख लो. लिखेगा वो ही सीखेगा, अदरवाइज तो पता नहीं कहां चला जाएगा. सेल्स रिटर्न at sales price and purchase return at purchase or cost price. एग्जाम्पल पता चल गया सबको? ओके, नाउ आई गो टू दैट ट्रांजैक्शन. ये वाला ट्रांजैक्शन था भगवती वाला, तो मैं इसका वर्किंग है ना अलग से लिख लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. नाउ यू कैन सी 15,000 का गुड्स जो हमने रॉयल से खरीदा, ऐसा कहां लिखा है? ट्रांजैक्शन में लिखा है. ओके, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स out of which goods of 15,000 sold to Bhagwati at 10% trade discount. Now यहाँ पे गुड्स कॉस्टिंग 15,000 था, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो उसका सेल्स प्राइस कितना है? 16,200. ये पता चला सबको? हेलो हेलो, नहीं सर, वापस समझा. ये फॉर्मेट देखा? हाँ. नाउ मैं लिखता हूं. ओके, कॉस्ट है मेरा 15,000. ये 15,000 के गुड्स का सेल्स प्राइस क्या था? सेल्स कितना है इसका? कितने में बेचा हमने? 16,200. 16,200. 1,200. तो अब सेल्स के सामने सेल्स रिटर्न कितना आया? 540. 540. तो कॉस्ट के सामने कितना? कैन यू फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग? Yes. It is equal to 15,000 into 540 upon 16,200, which is equal to how much? 500. Very good, 500. अब पता चला 500 कैसे आया? Yes. नाउ कल मुझे तीथी तुमने ही ऐसा कहा था कि सर ये वर्किंग नहीं करे तो नहीं चलेगा. अब तुम्हें पता चला वर्किंग क्यों करना पड़ेगा. हाँ. ओके, और नाउ यहाँ पे once again I'll explain the concept. The concept is कि sales return 540 आ गया, तो उसके अंदर तो हमारा प्रॉफिट भी था ना. तो जब सेल्स रिटर्न हुआ तो वो सेल्स प्राइस पे हुआ और परचेज रिटर्न होगा विद कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे नेट सेल्स जो है 16,200, उसमें से सेल्स रिटर्न जाएगा 540, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, तो कॉस्ट में से परचेज रिटर्न कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? डू द वर्किंग प्लीज. Yes, sir. ये वर्किंग कंपल्सरी है. इफ यू वांट मी टू रिपीट लेट मी नो. एक बार रिपीट कर दो. ओके, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन इज दिस, ट्रांजैक्शन नंबर 8. Goods sold to Bhagwati returned back goods of rupees 540. तो ये 540 is our sales return. तो
तो इसका तो हम एंट्री बना ही सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती अकाउंट क्रेडिट विच वी रिटर्न बैक टू रॉयल स्टोर्स। नाउ रॉयल स्टोर को जो वापस किया उसका अमाउंट हमें फाइन करना पड़ेगा। तुमने 12,000 10,000 में कुछ खरीदा है और वो 12,000 में किसी को बेच रहे हो, तो जिसको बेचा है वो तुम्हें वापस देगा, तो तुम उसको 12,000 वापस दे दोगे। अब तुम यही सामान जिससे खरीदा था उसको वापस दोगे तो वो तुम्हें थोड़ी ना 12,000 देगा, क्योंकि उसका बिल बना है 10,000 का। तो ऐसा हो सकता है 10,000 का बिल है परचेज का, तो वो तुम्हें 12,000 वापस करेगा। लॉजिकली पता चला सबको? तो यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि कितने का सामान कितने में बेचा। सो वी गो टू दिस ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वाला। 15,000 का जो गुड्स हमने खरीदा वो हमने बेचा 16,200 में। अब ये जो सेल्स रिटर्न आया वो आया 16,200 में से। ये 16,200 का हमने भगवती को बेचा था, तो भगवती ने 16,200 में से 540 रिटर्न किया। तो ये जो 15,000 रॉयल से हमने जो खरीदा था, तो रॉयल को इसके सामने फाइन करना पड़ेगा कितने का गुड्स हम वापस करेंगे। तो वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, हाउ विल यू डू इट? 16,200 is to 540, 15,000 is to how much? Understood this now? Yes. Okay, now let's go to the entry. So it is 15,000 into 540 divided by 16,200। ये वर्किंग लिखा है मैंने तुम सबके लिए। ओके, तुम वो पूरा स्क्रिबल किया वो सब तुम्हें लिखना है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऐसे हमने कैलकुलेट किया। नाउ 8 में पहला एंट्री हम लिखेंगे फॉर सेल्स रिटर्न। हमेशा सेल्स रिटर्न का तो तुम एंट्री बना ही सकोगे बिकॉज का अमाउंट दिया ही होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 540 टू भगवती और भगवती अकाउंट 540 अगेन 8 को। यही सब हमने रॉयल ट्रेडर्स को वापस कर दिया। सो रॉयल ट्रेडर्स या स्टोर्स, ओके ट्रेडर्स स्टोर्स दोनों दिया है तो कोई भी यूज कर सकते हो। स्टोर्स अकाउंट डेबिट 500 to purchase return account, goods goes out। हेलो सर, बोलो। આ બંનેનું બીઈંગ અલગ અલગ લખવું પડશે? Yes, obviously. What a silly question you are asking, sweetheart. નરેશન બે હોય તો એન્ટ્રી બે હોય તો બે જ નરેશન લખવા પડે ને। कितने मासूम सवाल पूछते हो तुम, कितने भोले हो तुम।
कौन था ये? परम था? सर 1 मिनट। मैं नो था सर। सर, दीप। दीप था, ओके। तो बहुत भोला है रे दीप। Okay, चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया. यस। Should I go to the next one now? Okay, now ninth one. Goods of 15,000 after adding 20% profit sold to Nirali at 10% trade discount, 10% cash discount, half amount received in cash. कितना सारा? So again चलो working करेंगे. Ninth one. I'll leave a line. Goods sold 15,000. उसमें प्रॉफिट कितना है चेक करो. 20% प्रॉफिट. सो प्लस 20% प्रॉफिट. 15,000 का 20% is 3,000. Underline it. Do the total. 18,000 minus 10% trade discount. 1,800. Okay, now again this will be 16,200. So this is our A net sales. Underline it. B half amount settled divide by 2, 8,100. 10% cash discount. 810. So 7,290. Now this is cash received. Working is not over. C amount receivable from Nirali. A minus B. So 16,200 minus 8,100. 8,100. Now, sales is credit, amount settled dash, cash received debit, so discount also debit, and amount receivable from Nirali. Nirali is the receiver, again debit. और मोबाइल में तुम्हें दिख रहा है? आज द फॉन्ट साइज ओके? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और okay. Now let's write the entry. We can start with Nirali account debit. $8,100. Cash account debit 7,290. Discount account debit 810. To sales account 16,200. Check कर लो, debit credit should match.
Close it. Now let's proceed. 10th one. Goods of 20,000 after adding 30% profit sold to Bhaumik at 10% trade discount and 10% cash discount if amount is paid in 10 days. So do we have to calculate cash discount right now? No, sir. No, we don't have to calculate right now cash discount. So let's do the working Bhaumik 20,000 adding 30% profit. $20,000 plus 30% profit, so 6,000. Please do the working, okay? Don't do it directly on calculator and write the amount and the entry. So 26,000 minus 10% trade discount, 2,600 23,400 net sales to Bhaumik. Now we write the entry. Bhaumik account debit to sales account. Underline it. Okay, next one. Should I proceed now? No, sir. Okay, I'll wait a while. Yes, sir. Okay, now 11. Paid 1,500 for advertisement bill of Gujarat Samachar. तो कौन सा expense है ये हमारा? Advertisement expense. So advertisement expense. सिर्फ advertisement लिखोगे तो भी चलेगा. Account debit. To cash account. Underline this. Narrations you have to write. We are not writing because we want to cover more transactions. Received personal dividend of 800 which is deposited in bank account of business. Underline personal. पर्सनल यानी क्या कि ओनर का खुद का पैसा उसने बिजनेस में डिपॉजिट किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो ये ओनर का पर्सनल इनकम है जो बिजनेस में आ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? What will be the entry?
capital, bank account debit to capital account credit. Is this clear? बट अगर यहाँ पे वर्ड पर्सनल नहीं होता तो एंट्री आता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, be careful. 12. Bank account debit to dividend account. Sorry, to capital account. Okay. Because it is personal dividend. You may write the narration for this so that you don't make a mistake. Being personal dividend deposited in bank. Now, 13. Nirali returned goods of rupees 650 sales from sales of 9. Now 13 से 16th भी connected है, but right now let's do 13. So Nirali ने return किया goods, so directly we know it is sales return. So entry is very simple, sales return account debit. $650 to Nirali account. Now, 14. अब ये 16 जब हम करेंगे तब करेंगे 14. Goods of 400 issued as free sample which is distributed to customer in free for advertisement. फ्री में मिला, फ्री में दे दिया. तो इसमें कोई एंट्री आएगा इसमें? No, it's a non-economic. Non-economic transaction. So it will not be recorded in books of accounts. Now 15. A check of half amount is received from Bhaumik and cash discount allowed. Now Bhaumik वाले transaction में पहले चले जाते हैं कि भौमिक किधर था. भौमिक था 10th ट्रांजैक्शन में. तो तुम्हें ना एग्जाम में ये सब का ट्रैक रखना पड़ेगा. तो 10 ट्रांजैक्शन पहले देखो, उसमें 20,000 के गुड्स आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट सोल्ड टू भौमिक at 10% trade discount and 10% cash discount. तो 10th ट्रांजैक्शन पे चले जाओ. कितने अमाउंट से एंट्री किया था? 23,400. So let's do the working. Amount આમાં cash discount ગણવાનું ને? ગણવાનું. ભૌમિક 23,400
नाउ इसका हाफ अमाउंट सेटल करने वो आया तो डायरेक्टली इसका हाफ कर लो 11,700 minus. Now we have to deduct 10% cash discount. Find the difference. 10,530. 1,530. Check is received, so check received. Now बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और भौमिक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. सो राइट द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10530 discount account debit 1170 to Bhaumik account. Bhaumik is the giver, credit the giver 11700. सर हाँ बोलो. सर इसमें सी नहीं आएगा. क्या सी नहीं आएगा. सी सॉरी आई डेंट गेट यू. क्या नहीं आएगा? परम हेलो हाँ શું કીધું તે? सर सी नहीं आएगा. सी सी नहीं यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ऊपर उसको कर दिया है ना, ऑलरेडी उसको डेबिट कर दिया है 23,400 से. गॉट इट? ओके सर. उससे 23,400 लेने Yes, का ऑलरेडी उसके नाम के सामने लिख दिया. अभी वो कितने दे रहा है? 11,700 सेटल कर रहा है. उसके नाम के सामने वो माइनस कर देंगे. गॉट इट? ओके सर. ओके. यस सर. नेक्स्ट वन, goods returned by Nirali of 13 sent to Kruti. So now you tell me the amount of purchase return please. निराली वाले ट्रांजैक्शन में आ जाओ. सबसे पहले ये रहा हमारा निराली वाला ट्रांजैक्शन. तो गुड्स सोल्ड यानी उसका कॉस्ट था. लेट मी राइट ओवर योर कॉस्ट. गुड्स कॉस्टिंग 15,000 था. उसको कितने में बेचा? બસ પોઈન્ટમાં આવે છે. टू. પોઈન્ટમાં આવે છે આન્સર. तो पॉइंट में आवे तो एमा શું વાંધો છે? લેટ મી ચેક ધ સોલ્યુશન. Oh, it's okay. 602. ના આવી શકે પોઈન્ટમાં. ના પણ સર એટલે પોઈન્ટની વેલ્યુ લખવાની કે રાઉન્ડ ઓફ કરી દેવાની? પોઈન્ટ લખો તો પણ ચાલે અને રાઉન્ડ ઓફ કરો તો પણ ચાલે. ઓકે, બોથ આર કરેક્ટ. ओके, कैलकुलेट करो. सेल 16,200 और कॉस्ट 15,000. तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न, कॉस्ट में से परचेज रिटर्न. सो लेट मी डू द वर्किंग ओवर हियर. $16,200 sales return 650. Cost 15,000. तो परचेज रिटर्न कितना? तो कैलकुलेट करेंगे. 15,000 into 650 divide by 16,200.
कितना आ रहा है? 601 rupees 0.85. 601.85. So 602. Okay. Now we have to write entry only for purchase return. So Kruti is the receiver, debit the receiver, 602 to purchase return. Six zero two. All of you understood this? याद क्या रखना है? सेल्स के सामने सेल्स रिटर्न, तो कॉस्ट के सामने परचेज रिटर्न. ओके, एंड दैट्स व्हाई वर्किंग इज इंपॉर्टेंट. $17. A machine of 7,000 purchased. A machine purchased for 7,000 and paid 500 cash for installation of machine. तो machine का cost कितना हुआ? 7,500. 7,500. किसी का नाम नहीं दिया है तो we are paid by cash. So entry is machine account debit 7,500. To cash account. Okay, now next one. Goods of 300 received as a free sample. क्या आएगा इसका एंट्री? Non-economic. Non-economic. Write down non-economic transaction. $19. After deducting 100 discount, check issued to Royal Traders as final settlement. Important mark करो 19th को please. 19th को important mark करो. Now सबसे पहले रॉयल ट्रेडर्स को ढूंढना पड़ेगा हमें. So रॉयल ट्रेडर्स किधर आ रहा है? Check out the transactions. What's the transaction? Fifth. Fifth. और फिर मैंने रॉयल स्टोर्स और रॉयल ट्रेडर्स एक ही है. So 28,200 we had to pay. उसके बाद रॉयल किधर आया? 500 का गुड्स रिटर्न किया और कुछ पेमेंट किया हमने रॉयल को, कहीं नहीं है. फिफ्थ है, फिर एट है. ठीक है. सो यहाँ पे लेट्स डू अ वर्किंग अमाउंट ड्यू और अमाउंट टू बी पेड और अमाउंट पेएबल 28,200. See the entry. Purchase return 500. Wait. Let me go through it. एक minute. Just a minute. ये actually, hold on. Fifth transaction. Illustration में fifth का आंसर देखो. Sir, 30,000 also. हाँ, तो 30,000 आ रहा है. mistake. Okay, because यहाँ पे ऐसा दिया है. लिया उन्होंने 200 की जगह. This is 1,000.
Okay, so there is a correction. Okay, so either we can continue with what we have done or we can change. क्या करना है हमें? Continue करें हम? कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं. ओके, दैट्स बेटर. तो तुम्हारा टोटल मैच होगा नहीं. ओके, सो चिंता मत करना, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में करेक्शन है जो यहाँ पे था नहीं. तो वी फॉलो द टेक्स्ट बुक. सो 28,200 minus purchase return. Please do the working. Very important. 500. So amount payable minus discount. कितना discount? 100. After deducting check issued. So check issued to Royal Traders. 27,600. Now let's pass the entry. Who is the receiver of check? Royal Traders or Royal Stores. Okay, same है. Debit. कितना अमाउंट पेएबल था? 27,700 to बैंक अकाउंट. 27,600 to discount or allowance account. 100. Twentieth. Now Nerali deducted allowance 50 and settled the account. यानी निराली ने अकाउंट सेटल कर दिया. तो अभी चलो निराली को ढूंढेंगे हम. निराली किधर है? देखो कौन से ट्रांजैक्शन में है निराली. ट्रांजैक्शन नंबर 9. उसमें निराली से कितना पैसा लेना बाकी था? 8,100. उसके बाद चेक करो 8,100. चेक करो कुछ रिटर्न है. 650 का रिटर्न है. 650 यू कैन सी ओवर योर. सो लेट्स डू द वर्किंग. 8,100 के सामने 650 का रिटर्न. चलो वर्किंग नोट करेंगे. अमाउंट ड्यू 8,100 minus sales return 650. So we calculate minus allowance or discount. Okay, 50. So 7,400 is what we are going to receive. Now कुछ भी नहीं दिया है तो कैश रिसीव. You can make the entry. Cash account debit 7,400. Allowance or discount account debit 50. To who is the giver? Nirali is the giver. Nirali account 7,450. 1,000. Yeah.
Done all of you? Now 21. On account, Bhaumik paid 5,000 and paid cash 5,000 and issued check for remaining balance and settled account. Now Bhaumik को पहले ढूंढना पड़ेगा हमें. Bhaumik 15th को half amount is received. So let's go to directly 15. अब अमाउंट कितना ड्यू था भौमिक से 23,400, उसमें से 11,700 उसने सेटल कर दिया, तो बाकी रह गया कितना 11,700. अदर वे हाउ यू कैन डू दिस इज 23,400 डेबिट बैलेंस था भौमिक से हमें मिलना चाहिए, उसके सामने 11,700 हमें मिल गया यानी सेटल हो गया, तो रह गया 11,700. सो अमाउंट रिसीवेबल 11,700, इसमें कैश हमें मिला 5,000 और चेक मिला, सो बैंक 6,700. So we can directly pass the entry over here. Cash account debit, $5,000. Bank account debit, 6,700. To Bhaumik account, 11,700. Underline this. Now 22nd. Goods of 4,000 destroyed by fire and insurance company admitted claim for 3,000. 200 realized from sale of goods destroyed. तो 200 rupees हमें कैश में मिला, 3,000 का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ, तो नुकसान कितना हो गया 4,000 minus 3,000 minus 200, that is 800. So let's write the entry. Cash account debit 200, insurance company account debit 3,000, loss by fire account debit 800 to परचेज अकाउंट, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो हमारे परचेज से डिस्ट्रॉय हुए, सो 4,000. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंट्री? किसी को कोई डाउट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंट्री? नाउ 23rd, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, मार्क करो इंपॉर्टेंट. टू अर्न प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस 5,000 सोल्ड. टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस 5,000 सोल्ड. नाउ प्लीज ध्यान देना ये कंसेप्ट पे. नॉर्मली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस. यही किया है अभी तक हमने, इसमें किसी को कोई डाउट है? No. नाउ ये सम में क्या दिया है? Read the sum, look into the textbook please.
यहाँ ऐसा दिया है टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस 5000 सोल्ड। नाउ यहाँ पे कॉस्ट दिया है 5000 का, पर प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है या सेलिंग प्राइस के ऊपर है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। नाउ ध्यान दो स्टूडेंट्स प्लीज। अब जब तक तुम्हें सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा। यू अग्री विथ मी? फिर से एक बार, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉस्ट पे प्रॉफिट अप्लाई कर देते हैं और सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं, पर यहां पे ऐसा कहा है, देखो प्लीज बुक में, टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर प्रॉफिट फाइंड करना है मुझे। समझ में आया? समझ में आया? यस। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है 100, तो हम क्या करते हैं, प्लस प्रॉफिट कर देते हैं 100 के ऊपर 20, सेलिंग प्राइस आ गया 120, इजंट इट? अभी तक हमने ऐसा ही किया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पे कहा है कॉस्ट है 5000 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। ये जो प्रॉफिट है वो 20% है, पर किसके ऊपर है? ऑन सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस भी नहीं है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा। यू अग्री? यस। ऐसे सब में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, ऐसे सम्स में हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस में, यहां पे एज यू नो सेल्स प्राइस भी मिसिंग है, प्रॉफिट भी मिसिंग है, तो यहां पे वी विल एज्यूम, यहां पे वी विल एज्यूम सेलिंग प्राइस एज 100। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 एज्यूम किया तो इसके ऊपर अब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा? 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना आएगा? 20। 20। तो कॉस्ट कितना आएगा? What will be the cost? 80. 80. 80. Yes, very good. Now see, we'll go to the next page. Cost plus profit is equal to sales price. Now we have taken sales price as 100. Now question में ही दिया है कि profit is on sales price, तो 20 आ गया। तो if profit is 20, cost is 80, तो 80 plus 20 is equal to 100। ये पता चला सबको? यस। Now ध्यान दो, ध्यान दो, अब कॉस्ट कितना हमें पता है, 5000 है, दिया है कॉस्ट, तो कैन वी डू 5000 is to 80 या 80 is to 5000, 100 is to how much, cross multiply? Understood this? Or you can also do 80 is to 5000, 20 is to how much? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5000 into 100 divide by 80 is equal to how much? कैलकुलेट करो। 6250. 6250। अब अगर तुमने यहाँ पे डायरेक्ट 5000 पे 20% ऐड कर दिया तो योर आंसर विल बी रॉन्ग, because profit is on selling price. Let's check out
6250 का सेलिंग प्राइस है, उसका 20% फाइन करो तो कितना आ रहा है? 6250 का 20% फाइन करो तो कितना आ रहा है? 1250. 1250. मैच हो गया? Yes, sir. तो वर्किंग कर लो प्लीज. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो इट. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू प्रोसीड. तुम्हें देखना है कि प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है या सेल्स के ऊपर है. अगर सेल्स के ऊपर है तो सेल्स को 100 एज्यूम किया, 20 प्रॉफिट लिया तो कॉस्ट 80 मिल गया. तो 80 के सामने 5000, तो 100 के सामने कितना? डू दिस वर्किंग. सर नखाओ पड़ी जुगन. ट्रांजेक्शन वाच्यू? हाँ सर. वाच्यू वाचतो. एक मिनट. To earn 20% profit on selling price goods or cost price of 5000 sold. करवानो. कॉस्ट ऊपर के सेल्स ऊपर? Cost sales पर. सेल्स पर. तो अगर कॉस्ट तारी 5000 છે તો પ્રોફિટ તું એના પર તો કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરી શકે કેમ કે પ્રોફિટ ઇઝ ઓન સેલ. તો સેલ્સ પ્રાઇસ તો આપણી આગળ છે જ નહીં કેમ કે ના પ્રોફિટ નહીં મળે તો સેલ્સ પ્રાઇસ નહીં મળે, સેલ્સ પ્રાઇસ નહીં મળે તો પ્રોફિટ નહીં મળે. એટલે આપણે સેલ્સ પ્રાઇસ ને એસ્યુમ કર્યું એઝ 100. તો પ્રોફિટ થઈ ગયું 80, તો કોસ્ટ પ્રોફિટ થઈ ગયું 20, તો કોસ્ટ કેટલું થઈ ગયું 80. તો 80 ની સામે કોસ્ટ 5000, તો સોરી, તો 100 સામે કેટલું? ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય. ગોટ ઇટ? Yes sir. So you will get this. સર એટલે આપણે એઝ્યુમ કરી શકીએ. હા, એ જ કરવું પડશે ને, બીજું કોઈ ઓપ્શન જ નથી. વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ એલ્સ. વી હેવ ટુ એઝ્યુમ ઓનલી. નહીં તો તું ફાઇન્ડ જ નહીં કરી શકે ને કેમ કે તારું સેલિંગ પ્રાઇસ મિસિંગ છે અને પ્રોફિટ મિસિંગ છે. સેલ્સ નહીં મળે તો પ્રોફિટ નહીં મળે, પ્રોફિટ નહીં મળે તો સેલ્સ નહીં મળે. તો યુ ટેક સેલ્સ એઝ 100, profit as 20. Got it? Okay sir. Yes sir. सबने? Should we go to the entry now? Should we go to the entry now? Yes, sir. Okay, now I go back to my screen. Now, to earn 20% profit on selling price, goods of cost price 5000 sold. अब BIA यहाँ पे, तो here we can do the working. Once again, I'll do the working over here for all of you. Cost 5080 है, तो उसके सामने 5000 है. तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो उसके सामने कितना अमाउंट आएगा, सेल्स प्राइस कितना आएगा? तो वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट वी गेट इज 5000 into 100 divided by 80, which is equal to 6250. Extremely important working please. So यहाँ पे directly दिया है sold for cash, so cash account debit. सिक्स टू 50. अगर एग्जाम में तुमने 5000 पे 20% डायरेक्टली कर दिया तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट ऑन कॉस्ट जो अभी तक हम करते आ रहे थे. प्रॉफिट नाउ इज ऑन सेल्स. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?
वर्किंग लिखना प्लीज. Now, next one. Interest for 1 month paid on loan of Srimati. 24. श्रीमती का लोन कितने रुपए का हमने लिया? 30,000. तो 30,000 is the loan amount into rate of interest 10%. For how many months? 1 month. So 1 divided by 12. Calculate करो. $250. 250, correct. So 250. So let's write the entry. Interest on Srimati's loan. $250 to cash account. 250. Just a minute. Now, 25th, goods destroyed in rail accident 2500. So very simple. Loss by accident or by rail accident. $2,500. To परचेज अकाउंट, बिकॉज ये गुड्स हमारे परचेज से गए हैं, तो खरीदा था वो डिस्ट्रॉय हो गए. 2500. $26. Market important. $50 shares of Adani Power Limited purchased at a market price of 300 per share and including 2% brokerage. Amount paid by check. Sorry. Let's do the working. Shares. $50 shares at the rate rupees 300. So 15,000 plus 2% brokerage. So 15,000 pay 2% brokerage is 300. So total cost of shares 15,300. So let's pass the entry. Shares of Adani Power Limited account debit 15,300 to bank account. Brokerage is to be added to the cost of the shares. $27. A computer of business. Market important, please. Market important.
a computer of business of 2500 sold to Karuna for 1000. Now computer का cost कितना था या उसका 500. value कितना computer of business of 2500. So I'll say उसका book value यानी books में उसका value था 2500. Sales price कितना है उसका 1000. तो profit हुआ या loss हुआ? Loss. Loss on sale of computer 1500. So working करो please. So लॉस को हम डेबिट करेंगे. लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 1500 करुणा से अभी तक हमें पैसा मिला नहीं है. सो करुणा अकाउंट डेबिट और नाम भी दिया है तो उससे 1000 लेना है. एंड टू व्हाट गोज आउट कंप्यूटर गोज आउट 2500. $28 is very simple. Electric bill of 1800 and telephone bill of 700 of firm paid by check. So we can directly do this. Electricity expense debit, telephone expense debit to bank account credit. Expense debit telephone expense account debit to bank account 25. $29. Goods of 500 was stolen and 200 was ruined in the rain. तो दोनों में लॉस हो गया. 29. और 29 बैंक हैज क्रेडिटेड वाला है. 29. Bank has credited 200 for interest and debited 100 for bank charges. Now we cannot combine. We have to do it separately. Bank has credited 200 for interest यानी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 to बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. बैंक हमें क्रेडिट करेगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे. okay? या ऐसे याद रखना बैंक ने क्रेडिट किया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक इज द रिसीवर डेबिट द रिसीवर. 29 डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस. सो बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने डिडक्ट किया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ. बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 to bank account 100.
30. Goods of 500 stolen and 200 was ruined in the rain. So 30th, very simple. Loss by theft. Account debit. $500. Loss by rain. Account debit. To purchase account. Now 31st. 31st, obtain change for 1,000, but currency note of 100 was duplicate. Nothing can be realized. तो क्या हो गया हमें? 100 रुपए का डुप्लीकेट नोट आया तो क्या हो गया? लॉस। तो सन्ड्री लॉस. अकाउंट डेबिट. 100 का ही नुकसान हुआ. 1000 का नोट दिया, 1000 रुपए वापस मिले, पर एक 100 का जो नोट था उसमें वो डुप्लीकेट आ गया, तो 100 का ही नुकसान हुआ. टू कैश अकाउंट 100. पेज वाइज टोटल करके इसको क्लोज कर दो. मैराथन सम. टोटल किया है किसी ने? Is anyone doing total? कोई बात नहीं, बाद में कर लेना. If you have not maintained the track of per page total, it will be difficult. If you want, I can do it for you. So let's check. 3,91,042 is the total. It will not match with the textbook because of that printing error. Okay. किसी का आया ये अमाउंट?
यस सर। यस सर, मेरा आ गया। Great. Great.